So, hello everyone. Good afternoon again. Good afternoon, all of you. I hope you had a wonderful day so far. चलो अभी हम perspectives on human geography, geographical thought. Last class में introduction हो गया था. Now we will discuss the next aspect, a topic called as dichotomies and dualisms. Right. I hope when you have listened to the geographical thought and perspectives in the last session, थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगा एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट कभी कंफ्यूजन, कभी थोड़ा सा इवन देयर माइट बी एन एलिमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ ए ड्राइनेस इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल फिलोसॉफिकल थिंग्स, राइट? आई होप यू वुड बी एंजॉयिंग इट. मजा तो आएगा. चलो देखते हैं. टुडे वी विल सी dualism and dichotomies in geography, right? Hello everyone, right? So let's have a quick review of last class में हम लोग क्या complete किए थे? In the last class we have completed something about evolution of geographical thought. So let's have a quick overview. मतलब एक थोड़ा सा एक टाइमलाइन है ना? हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? टाइमलाइन डिस्कस किए थे. ये टाइमलाइन जो भी है आपको काम आएगा फ्यूचर में, जो भी टॉपिक्स कनेक्ट करने में एंड ऑल. दिस टाइमलाइन वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो द फर्स्ट फेज क्या बोला था मैं? स्टार्टिंग फेज क्या बोला था मैं? डिड आई से इट इज फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, ग्रीको रोमन पीरियड. यह है ग्रीको रोमन पीरियड. एरिस्टोटल, स्ट्रैबो, टॉलेमी, हेरोडोटस, हेक्टेटस, इराटोस्थेनीस, ये लोग क्या क्या किए? व्हाट आर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस? क्या फिजिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट किए? क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट किए? कुछ कुछ वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर व्हिच वी गोना डिस्कस अगेन. थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, राइट? देन ग्रीक रोमन्स पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है, राइट? यू हैव सीन दैट यूरोप में that has led to a significant stage called as dark ages. Right? Dark ages in Europe. And this time, ये है समय where in this dark ages you have seen that there were significant contributions from the Arabs. Books बहुत prefer करते थे. They used to, in fact, they are the reasons why we are able to understand Greco-Roman, the Arabs' role, because they are able to preserve all the books which are based on scientific order, scientific analysis and all. आपको याद है डार्क एजेस के समय जैसे the role of church के through anything which is scientific, राइट? साइंटिफिक क्वेश्चनिंग के साथ जो भी बुक्स है, पास्ट है, सबको जला दिया गया था, राइट? सो दैट वाज द इरा वेयर द नॉलेज वाज नॉट एट ऑल एज ए क्राइटेरिया. साइंटिफिक टेम्पर ऐसे बात कुछ नहीं है, पीछे चला गया था. सो दैट वाज द इरा ऑफ डार्क एजेस यूरोप. देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव सीन दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनका नो भी नॉलेज है पुराने जमाने का, ग्रीको रोमन का. अरब लोग ने they have preserved that, they have created, they have converted, they have translated into Persia, Arabic and all, जिसके कारण हमको ये सारे चीज दोबारा वापस मिलने लगा. Also, they are also great voyagers. So we have seen their contribution, right?
Then at the same time, in the classical antiquity, we can also talk about India's Aryabhatta. All those dimensions you can remember. इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे? उसके बाद यूरोपियन रिनाइसेंस. European Renaissance, right? European Renaissance that led to age of exploration, voyages. दोबारा चर्च से वापस they started relying once again on humans, on the human capability to go through places to understand. और उसके बाद लोकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को ढूंढने का ह्यूमन एक्शन के ऊपर कैपेबिलिटी वापस आया था आफ्टर द डार्क एजेस अगेन इन दिस फेज. इसीलिए दे हैव द एबिलिटी, उनके पास कैपेसिटी है टू रोम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आइडेंटिफाई न्यू रूट्स, राइट? सो that is what we have there. That is what is age of voyages and discoveries. So very very important thing. उसके बाद that led to phase of pre-classical period. Phase of pre-classical period. प्री क्लासिकल पीरियड में मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन है? एनीवन? कैन यू टेल मी हु इज द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ प्री क्लासिकल पीरियड? भागिशा, आप बताओ. बताओ मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है? वेरिनियस कब आएगा? कार्ल रिटर कब आएगा? हम्बोल्ट कब आएगा? थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. यस, वेरिनियस एंड कंत. वेरिनियस एंड कंत, दिस इज द टाइम. दिस इज अराउंड 1600 1700. आफ्टर दैट वंस अगेन उसका रिवाइवल, द नेक्स्ट रिवाइवल होता है 19th century में. That's what we call it as the classical period. Classical period, modern classical period. Modern classical period. So this is the phase of what we can say Humboldt, Ritter. So Humboldt and all which will come across, right? And जो भी डाइकोटमी ड्यूअलिज्म के बाद हम लोग बात करेंगे आज, and so many aspects, in fact they have significantly evolved only from this period. It is these dilemmas and all have significantly evolved at this period, modern classical period के समय, right? Humboldt, Ritter, all those dimensions, right? After that there was some kind of a where you say perspectives, multiple viewpoints which have developed, right? Multiple methods in geography. Perspectives, methods in geography, so many dimensions have happened. That has led to a next phase which we call it as the debates phase and all, which has led to in 1930s and all, around 1940s, around 1940s, quantitative revolution. क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन मतलब इसी समय हमको बहुत सारे डिबेट्स, क्या ज्योग्राफी एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, अगर रहना है तो फिर क्या करना चाहिए, एवरीथिंग. क्या ज्योग्राफी में थ्योरीज रहना चाहिए, क्या ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट ही रहना चाहिए? Every kind of a question mark was there. So the geographers have tried to identify multiple dimensions like to develop some theories and all. That is the quantitative revolution. इसी के समय आपको aerial differentiation करके आता है रिचर्ड हार्टस्टोन का, right? So many dimensions which have came across at this point of
time. Then criticizing quantitative revolutions, criticizing that there was no role of a human. There was some kind of a critical phase. Criticizing these quantitative revolutions, they have emerged some kind of a critical revolutions. See, आपको एक चीज बताता हूं मैं, पैराडाइम्स बोलते हैं ना हम लोग. पैराडाइम जो भी एक सब्जेक्ट का, there is an approach, a template which we tend to study for so many years. When a certain approach becomes the dominant, उसको हम बोलते हैं paradigm, right? Geography should be studied as physical geography, एक paradigm. Should be studied as human geography, एक paradigm. क्या geography human geography से पढ़ना चाहिए या human geography? A confusion. And at the same time, both schools of thought growing, then that is multiple paradigm, right? So an approach of the subject of a study and a subject like geography, हम लोग उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या डोमिनेट फेज होना चाहिए. अगर एक अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी डोमिनेंट हो जाता है, वो बोलते हैं पैराडाइम फेज, राइट? सो दिस वाज द फेज ऑफ क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स. इसके बाद against them there emerged so many critical revolutions. एक फेज आता है, एक फेज बहुत आगे चला जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आने लगेंगे, वो क्वेश्चंस के ऊपर there would be further kinds of new approaches tend to grow, or new approaches धीरे धीरे they might try to go further, and that is when they would be successful. In the process you will find multi paradigms, right? There is a crisis, there is an approach of a school, that school becomes top, then the people start questioning it, वो deteriorate हो जाएगा. इसके alternative multiple subjects, multiple approaches will come across. Once again, most of them tend to grow, eventually only one will succeed, like the Darwinian theory, as Darwinian theory says, and that will be the major paradigm. So there is a crisis, eventually everything begins with a crisis. There is a major approach hit, that approach would once again fall down. Crisis, in terms of the crisis, multiple viewpoints, and once again few of them would survive, right? So this is the thing. Critical revolutions, this is where we have something called as humanistic, we have developed something called as behavioral geography. We have something called as humanistic geography. We have something called as radical geography. उसी के समय the approach of subject of geography has evolved, seeing through the lens of the needs of the woman. So feministic geography. Welfare geography. Right? Environmental geography. Yeah, environmentalism approach. Right? These are what are post 1960s. अभी के जमाने में almost all these phases have been criticized. Behavioral has also been criticized, radical was criticized, welfare was criticized, feministic was criticized. The major school of thought which has become the most dominant is environmentalism school of thought. इसीलिए हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी जो भी पढ़ते हैं ना, एनवायरनमेंट से जुड़ा रहता है. क्लाइमेट चेंज, लिमिट्स टू ग्रोथ, you see the perspective like which you talk about in the modern era, which we have discussed in the classes. एक क्लास में बोला था मैं, carrying capacity,
ecological footprint. So all the dimensions of the subject of geography are revolved across एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव. हम लोग जो भी माउंटेन्स के बारे में पढ़ाई करेंगे उसका इन्फ्लुएंस क्या है, हाउ इट इज डिटीरिएटिंग, वी हैव टू टेक सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. दैट इज एनवायरमेंटलिज्म. ये है द ज्योग्राफिकल स्कूल ऑफ थॉट, ए टाइमलाइन. ये टाइमलाइन जो भी यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर आपको एक टॉपिक समझने के लिए कहां पर क्या क्या हुआ था, what are the things have happened, you should be able to remember that so that it is easy for you to write answers. So timeline directly कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन indirectly पूरा सब्जेक्ट का बेस ये टाइमलाइन हो जाता है. नहीं तो कौन कब का जमाना है, क्या बोला था, उसका बुक क्या है, ये क्या बोला, वो क्या बोला, दिमाग निकल जाता है. So इसीलिए the first few sessions are really important. I hope you got my point, all of you. I hope you got my point. Okay, then moving further, see, एक चीज याद रखो, पर्सपेक्टिव्स ना इतना मुश्किल कभी कभी क्यों लगता है हमको. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर इज अ व्यू पॉइंट. पॉलिटिक्स ही देख लीजिए. वी से दैट देयर आर टू एक्सट्रीम्स, लेफ्ट विंग, राइट विंग, लेकिन सेंट्रल भी है. सेंट्रल के बीच में भी लेफ्ट सेंट्रल, सेंट्रल राइट, वो भी है. सो इफ यू टॉक अबाउट viewpoints, approaches, if there are two extremes, this is one extreme, this is another extreme, क्या मैं कह सकता हूं multiple, there are some kind of multiple viewpoints here. So if this is 1, if this is 10, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10 यहीं पर खत्म हो गया, चलो ठीक है. तो यहीं पर है, इफ दीज आर द टू एक्सट्रीम्स, नाउ दीज आर टू एक्सट्रीम्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट 3 and 4? हाउ विल यू डिफरेंशिएट 4 and 5, 4 to 6? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन फैक्टर? ये हमको समझ में आ गया ना, तब जाके टॉपिक इजी हो जाएगा. नहीं तो क्या लगेगा, सब सिमिलर लगेगा. Behavioral, humanistic, because all have emerged out of critical revolution, they have emerged out of criticizing the quantitative revolution. तो फिर थोड़ा सा डाउट हमको हमेशा रहेगा. So this is where you need to understand. Okay, so याद रखना, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी समझने के लिए फर्स्ट हमको चाहिए टाइमलाइन, सेकंड हमको चाहिए दिस व्यू पॉइंट विच विल वैरी. थोड़ा फर्क दोनों में कंपेयर करके हमको समझ में आ गया ना, दिमाग में हमारे पास रहेगा. सो फोकस ऑन द क्लासेस वेरी वेल, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच विल डिटरमाइन, राइट? देन एज यू स्टडी, always remember so remember these things as I told you, timelines, right? Timelines, subtle variations of each approach, this is what I have told you so far. दूसरा हमको याद रखना चाहिए, वो ज्योग्राफर्स, say for example Humboldt, Ritter, Ratzel, Semple, so many things. इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, इनका बुक्स विच आई टोल्ड यू कॉल्ड एज एग्जाम्पलर्स, उनका बुक्स, और उसके साथ साथ यह भी हमको याद रखना पड़ेगा कि ये लोग कौन सा
कंट्री से हैं, फ्रेंच, ब्रिटेन, अमेरिकन, that will also will help you to learn better. And also who is from France, who is from America, who is from Britain, Germany, Chrysler का theory का देखो, Germany, right? So such kind of things are very, very important as we discuss. With this background, let us go to the next dimension, a very, very simple one which we're going to discuss for today: dualism and dichotomy. Dualism and dichotomy. Any doubts so far? Any doubts? Let me see the comments. Hello, Barkha, Pinky, Vagisha. Any doubts? Chalo. Anshul. So you all say clear. Fine. That's good. Then let's talk about the dualism and dichotomy. Dualism and dichotomy. No. ये dualism and dichotomy जो भी है ना, ये तो हर सब्जेक्ट में रहता है. Even it will be there as part of our own life also, right? Dualism, dichotomy. तो हमको इसमें पर्सपेक्टिव्स में एक व्यू पॉइंट लेके आना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग क्लासेस सुनते हैं, एंड दीज क्लासेस आर एट अराउंड आफ्टरनून 3 to 5 PM, खाना खाने के बाद. कुछ लोगों को लगता है हाँ अभी सो जाता हूं, कुछ लोगों को लगता है नहीं 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 अभी सोता नहीं, पढ़ाई करूंगा, सो नाउ आई वुड लिसन. दिस इज ऑल्सो अ डाइकोटमी, राइट? क्या मैं पढ़ूं या सो जाऊं? राइट? सो यू विल ऑलवेज हैव अ पर्सपेक्टिव. मैं अभी पढ़ाई करूंगा, बाद में रिलैक्स कर दूंगा. कुछ लोग बोलेंगे नींद अभी आ रहा है तो फिर अभी सो जाऊंगा, बाद में रिकॉर्डिंग क्लासेस सुन लूंगा. So there are always multiple viewpoints. These are what is called as dualism and dichotomies, right? So what are they? These are multiple viewpoints. क्या ये सब्जेक्ट को एनरिच करेगा, क्या सब्जेक्ट को हैम्पर करेंगे? We have to see the things. For example, what is dualism, right? Existing of two often interchangeably used. पहले की ये याद रखना, मैं दोनों का फर्क बता देता हूं, but often you see they are interchangeably used. But if you see dualism, it means what? Dual thought process. Anyone, can you tell me an example of a dual thought process in geography? Existence of two contrasting approaches. Existing of two contrasting or opposing approaches. In studying geographical phenomena. In studying geographical phenomena. So this is the existence of two contrasting approaches in studying geographical phenomena. Then dichotomy का मतलब होता है, dichotomy का मतलब क्या होता है? वो भी similar है, but it is a much more broader one, right? Division of the subject into two distinct branches. In two distinct branches or subunits. In two distinct branches or subunits
for analytical purpose. ज्योग्राफी का इवोल्यूशन, पहले ग्रीको रोमन के पीरियड के हिसाब से उस जमाने में ज्योग्राफी का मतलब क्या है? देयर इज नो सेपरेट सब्जेक्ट कॉल्ड एज ज्योग्राफी. नॉलेज करके ही कुछ नहीं था. सॉरी, नॉलेज करके देयर इज अ ब्रॉड आइडिया. एवरीवन वांटेड टू परस्यू नॉलेज. इसलिए उस जमाने में स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है. इसलिए स्ट्रैबो, टॉलेमी एंड ऑल, यू हैव सीन मोर कार्टोग्राफर्स बेसिंग ऑन द स्किल्स ऑफ मैथमेटिशियंस एंड ऑल. उस जमाने में वो लोग क्या बारे में डिस्कस करते थे? एट द अर्थ सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम और सन सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू द सन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन? यही फोकस था. उसके बाद धीरे धीरे ज्योग्राफिकल फिजिकल एस्पेक्ट्स, वर्ल्ड वॉर्स के थ्रू दे स्टार्टेड मूविंग अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस ऑन द लैंड. लैंड में उनको हर डाइवर्स फीचर्स मिले थे. माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, व्हाटएवर. उसके नाउ दे स्टार्टेड वरीइंग अबाउट ओनली दीज एस्पेक्ट्स. दैट इज व्हाट इज फिजिकल एलिमेंट. लेकिन धीरे धीरे नॉलेज के साथ 1800 1900 जमाने के बाद धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अगर यहां पर माउंटेन है, यहां पर लेक है, हाउ डज इट इंपैक्टिंग ह्यूमंस? ह्यूमंस के ऊपर फोकस करने लगे. नाउ lake is not the lake is not exclusive by nature, no. The lake is used by the humans, the lake is impacting the humans. और humans भी क्या कर रहे हैं? अपने human activities से they are also impacting the lake. So there is a relationship between the physical aspects on the human. अच्छा, when you study about lakes, not just studying about the physical aspects of a lake or a mountain or a river, they are also impacting humans. I can say it's a two contrasting approaches. लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं, कॉन्ट्रास्ट अप्रोच नहीं, हम इसका एक्सक्लूसिवली अलग से पढ़ाई करेंगे बिकॉज द फोकस इज टू बिग. जैसे कार्ल रिटर ने बोला था, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी. फिर ज्योग्राफी में दो ब्रांचेस लेके आओ. आप जनरल लॉस, थीरीज वगैरह लेके आएंगे, वो फिजिकल ज्योग्राफी है. फिजिकल ज्योग्राफी आसान है in the sense of creating general laws and universal laws and applicability. क्यों? Because you know there is a process. Whenever there is more heat in the atmosphere, there would be atmospheric instability, ना. तब जाके हमको tornadoes, tropical cyclones, thunderstorms, what not. Even in the modern era, global warming, climate change के कारण micro level storms भी हमको मिलेगा. Right? So what is the idea? There is a general scientific process. More heat, convection, atmospheric instability. तो एक हम लोग जनरल थ्योरी लेके बना सकते हैं. That is physical geography. लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमंस आर क्वाइट यूनिक. हर जगह मल्टीपल व्यू पॉइंट्स है. राइट? इंडियन, यहां पर इंडिया में रूल्स में हम लोग इतना इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये लोग भी रिलैक्स हो जाएंगे, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे. लेकिन सेम इंडियन as part of the international migration when he goes to America, Dubai and all, Australia and all, वहां के रूल्स को फॉलो करता है. Why? Person is same, should behave in a different way? No. Why? Implementation. मतलब क्या है? हर रीजन में हमको humans are different. Now how can we study it as a contrast approach? हमको अलग चाहिए. We will study about human approaches in an exclusive way. That is dichotomy, division of a subject into two distinct branches. I hope you all got the point. Simple understand. Dualism में when you are getting so many debates, sometimes the debates are in such a way that वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं, whatever, or you are creating structural divisions
अल्टीमेटली दोनों will help in prosperity of the subject only. Will help in prosperity of the subject or growth of the subject. Prosperity or growth of the subject. देख लीजिए, ये एक चीज याद रखो. कुछ लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में, जब हम लोग रीजनल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि हाउ डाइकोटमी इज मोस्ट फेवरेबल because it will help in divisions and proper interconnection and proper synthesis. तो कुछ लोग बोलेंगे dichotomy is very very favorable because this helps in interconnections of the subject and help in synthesis of the subject. Synthesis. So this is also a important aspect. I hope you got it. Got my point, all of you? That synthesis is very very important. We will discuss that. Then, if you see the major dichotomies and dualisms which are there, we can say that one of the major dichotomy and dualism, which is what we can call it as physical and human geography. कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए? Physical versus human geography. So मतलब सब्जेक्ट का ही कंटेंट बदल दिए. फिजिकल कैसे पढ़ना चाहिए? फिजिकल पढ़ना चाहिए या ह्यूमन पढ़ना चाहिए? That is one. Then, how do we need to study human geography? This subject itself, human geography कैसे हैंडल करना चाहिए? उसमें भी multiple dualism and dichotism. One such bigger dualism and dichotism between these two is what is determinism, possibilism. आप सबको फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जानते हो, राइट? द नेचुरल साइंसेस जहां पर लॉस एप्लीकेबल हो सकता है, लाइक प्लेट टेक्टोनिक्स, like the earthquakes, which are scientific. There is a process and there is a human which is unique. हर जगह अलग अलग होता है. So that is there. Humans which are unique. So study of human geography. But our nature is controlling the humans or humans are controlling the nature? Multiple viewpoints. Determinism says that we are all determinants of nature. नेचर जैसा है उसका बाई प्रोडक्ट है हम. पॉसिबिलिज्म बोलता है पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द मैन. ह्यूमंस के हिसाब से, उनका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से वो कुछ भी कर सकता है. दैट इज पॉसिबिलिज्म, राइट? हाँ, एक जमाना था मेजॉरिटी इज डिटर्मिनिज्म, क्योंकि उस जमाना का टेक्नोलॉजी अलग था. लेकिन अभी का जमाना में हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ना. डीप सी माइनिंग कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी इन द फ्यूचर हम लोग मिनरल एक्सप्लोर करेंगे, नॉट फ्रॉम चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. इन दैट वे वी माइट थिंक अबाउट अर्थ, मून, मार्स इन दैट वे ऑल्सो, right? There might be a future in that way also. So that is also there, human geography. So that is possible. So many things might vary. This is one such approach. So there are two dualisms and dichotomy: physical versus human geography, determinism versus possibilism. So ये कंटेंट के ऊपर है. दूसरा, सब्जेक्ट मैटर में कैसे डिस्कस करना चाहिए, अप्रोच क्या करना चाहिए. There was one more approach. How to approach this? Systematic versus regional.
सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल, या ये भी कह सकते हैं सिस्टमैटिक को जनरल, रीजनल को स्पेसिफिक। हाँ, इंडिया को अगर इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया में माउंटेन्स कैसे है, दैट इज रीजनल। पूरा दुनिया का माउंटेन्स पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक, जनरल, राइट? बोथ आर नीडेड। सो दैट अप्रोच इज सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं रीजनल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट द सिंथेसिस। The nature God has provided us things in a different way. It is the human's interpretation which we need to combine as a unit and go for it. That is what is regional or specific, right? मतलब जोग्राफर का रोल होता है हर यूनिकनेस में समझ में आना, हर एरिया का, और उसी के ऊपर एक प्लान लेके आने का। That is regional. So that is the systematic versus regional. Then there are some methods we will discuss also. Inductive versus deductive. Inductive versus deductive. Inductive method. Inductive method एक approach होता है, deductive method एक approach होता है. So both are very different. For example, if I say along the water, along the rivers, civilizations can be seen. वो एक अप्रोच है। जहां पर सिविलाइजेशंस हैं वहां पर पानी मिलेगा, वो दूसरा अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव, डिडक्टिव। theory with respect to observations, observation with respect to theory. There are multiple approaches. So that is also an approach. Method of study, that is also a dichotomy. So broadly we can say these are the major dichotomies, but we can give some more dichotomies, right? Some more dichotomies also. Say others, maybe in the philosophical approach, even this also comes under determinism, possibilism comes under philosophical approach only. In the philosophical approaches, right? You can also talk about exceptionalism versus spatial science. Exceptionalism, okay, versus spatial science. वो भी एक philosophical diversifical viewpoint है, right? You can talk about pure applied, objective, subjective. Some people also talked about pure and applied, but usually basically these are the most important. These are all other variants which you can ignore, but just for name's sake, when we are dividing about dichotomy and dualisms, you need to be aware about everything. So dualism and dichotomy in geography. Dualism and dichotomy. So note down some aspects now. Note down some aspects. So now, note down. Dichotomy and dualism.
dichotomy and dualism are not just unique to geography. They are shared by multiple disciplines. Dichotomy and dualism are not just unique to geography, they are shared by multiple disciplines. Multiple disciplines in various degrees. In various degrees. Then, next point. The debates and discussions, the debates and discussions have helped in various scholars presenting their dynamic viewpoints, have helped in various scholars presenting their dynamic viewpoints, which led to different interpretations and different approaches. Which led to different interpretations and different approaches. Right? Verenius has a tendency of dividing the geography into two types of subject matter. See, ancient period में क्या होता है? There was no such kind of a dichotomy or a dualism. But general viewpoints are there. मतलब सब्जेक्ट उतना लेवल तक गया नहीं, तब नॉलेज ही मेजर था. देयर इज नो स्पेशलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी ओनली. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए, वो तब नहीं आया था. दो देयर आर मल्टीपल references about every dimension, physical versus human, general versus regional. Every dimension was there. स्ट्रैबो, एरिस्टोटल, सब लोग बात किए थे, लेकिन वो एक ड्यूलिज्म डाइकोटमी का वेरिएशन तक नहीं पहुंचा था. सो इट वाज ओनली इन द प्री क्लासिकल पीरियड एंड द पोस्ट क्लासिकल पीरियड, प्री मॉडर्न एंड द पोस्ट मॉडर्न, वेरिनियस के थ्रू you have seen that the dichotomies have evolved. Verenius divided into two types of subject matter: general geography, special geography. General geography, special geography. Kant has spoken more about special geography. Kant focused on special geography. He has given multiple divisions. लिखने की जरूरत नहीं है. Political geography, moral geography, mathematical geography, बहुत सारे divisions लेके आया था. Right? Humboldt and Ritter, that was the time. Humboldt and Ritter, Carl Ritter
Alexander von der Humboldt. They are the ones who has given the actual division, clear-cut division in the methodology of geography. So from now there is a clear-cut division. Humboldt focused on systematic approach. Ritter promotes regional approach. So Humboldt, systematic. Ritter focused on regional approach. In fact, Humboldt also said that physical geography itself is general geography. Humboldt has said that physical geography itself is general geography. That's what Humboldt has said. इसका एगेनिस्ट कौन आता है? कोई बोल सकता है? Anyone? इसका एगेनिस्ट कौन है? Now, against this viewpoint, Ratzel. Ratzel. Friedrich Ratzel. He has introduced the human geography elements very significantly. Human geography was promoted like anything. Culture was back again. So this is where the new dichotomy began. Physical versus human. That is how the things are. Yes, Vagisha, right. Ratzel, human geography. To that extent that Vidal Lablache, Vidal, he says that human geography itself is general geography. देखिए दोनों का एक्सट्रीम्स. Humboldt ये बोलता है कि physical geography itself is general geography, whereas Vidal de Lablache themselves, he says that human geography means itself is general geography. So this is the dimension. Because Vidal de Lablache किसके बारे में contribute किया था? He contributed about possibilism, where multiple viewpoints of the humans, it is the human who has the ability of deciding based on his or her technology, availability of technology, to decide what could be the course of action in relationship between human and environmental relationship. Matlab, there are endless possibilities, everywhere there are necessities, there are endless possibilities, हमको यूज करना आना चाहिए. जैसे कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स सालों से डीप सी बेड के ऊपर है, ऑन द डीप सी, इन द डीप सी प्लेन्स. हमको हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी आया था. So that is a possibilistic idea. There are minerals which are there since ages in Mars, in Moon. हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रहा है ताकि वहां जाके, अभी जा रहे हैं हम लोग, ड्रोन्स अभी मॉनिटर कर रहे हैं. मे बी इन फ्यूचर दे एक्सट्रैक्ट एंड ब्रिंग इट बैक. दैट्स हाउ थिंग्स आर, राइट? So that is what he has focused on, possibilism. He studied about various tribes, their contributions. He studied about cultural landscapes, trade, transport, all these dimensions. So that is how the things have evolved.
Okay. Right. Now, next one, general geography versus spatial geography. So let's talk about this now. General geography versus special geography. Before I explain, एक table. Okay. Africa, Australia, Europe, Asia, North America. Multiple regions ले लिया था मैं. ठीक है. Multiple regions. Then on each region, उसका land forms, mountains, plateaus, plains, उनके rivers, उनके climate, उनके water resources, उनके minerals, उनके resources in general, industries, agriculture, population, क्या ही बताऊं. Now you prepare a table. Now if you divide in this way, क्या मैं ये कह सकता हूं, if you are studying from the point of view of how is water climate across the world, can I say this is general geography? दुनिया का क्लाइमेट कैसा है? Now if you are trying to study about this, can I say this as general geography, all of you? Would you agree with me? This is what I can call it as general geography. लेकिन एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में लैंडफॉर्म्स कैसा है? और वो लैंडफॉर्म्स विच आर अ प्रोडक्ट ऑफ द रिवर्स, क्योंकि रिवर्स उसी लैंडफॉर्म को एरोड कर रहे हैं. एंड दोज रिवर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट, एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वाटर फ्लोस, मे बी इन द प्रोसेस मिनरल्स, एक्सट्रैक्शन, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, उसी के हिसाब से पॉपुलेशन. To study in that way, there is an order. That is regional geography. Geography is all about interdisciplinary nature. मेरे हिसाब से, right? So you need to understand the God's plan, right? हमको ये समझ में आना चाहिए ना. देखिए एक चीज कहता हूं मैं. लैंडफॉर्म, अगर एक लैंडफॉर्म बन गया था, जैसे पेनिनसुलर इंडिया, it is created out of the rock of ancient crystalline metamorphic rock, granitic gneiss and schist. अगर the base rock complex of India, क्या ये कह सकता हूं मैं, granitic gneiss and schist, granitic rock, gneiss and schist. So you have find an igneous metamorphic variety in the Indian peninsula, dominant variety of rock. अगर यहीं पर क्लाइमेट अलग है ना, जहां पर क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम नहीं है, जहां लीचिंग कम है, यू सेंट टू सी दैट रेड सॉइल वाज डेवलप्ड. लेकिन वहीं पर
जहां क्लाइमेट ज्यादा एक्सट्रीम था, मोर रेनफॉल, हेवी अल्टरनेटिंग ड्राई एंड वेट पीरियड, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स का टॉप रीजन्स एंड ऑल, वहां पर क्या हुआ था? सिमिलर बेस रॉक, पेरेंट रॉक, लेकिन आउटकम अलग हो गया। क्या अलग हो गया? दैट लेड टू लैटरेट सॉइल्स। तो अभी क्या हुआ? सिमिलर लैंडफॉर्म्स, सिमिलर पेरेंट मटेरियल, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट सॉइल्स, सो अकॉर्डिंगली डिफरेंट एग्रीकल्चर। मतलब क्या हुआ? हमको एक रीजन में वेरिएशंस के लिए, वो यूनिट समझने के लिए, वो कोहेसिवनेस समझने आने के लिए ये देखना चाहिए, नॉट दिस। दिस इज वन सच अप्रोच। आर यू फॉलोइंग मी, ऑल ऑफ यू? फॉलोइंग मी नाउ? लेकिन सिस्टमैटिक का फायदा क्या है? सिस्टमैटिक का फायदा क्या है? एक जनरल रूल है, देयर इज ए इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, जहां पर बारिश ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। देयर इज ए डेजर्ट रीजन, there is a Mediterranean region on the west coast of the temperate grasslands, right? There is a Siberian climate, Arctic climate. हम लोग एक जनरल लॉस एंड थ्योरीज यूनिफॉर्मिटी बना सकते हैं क्लाइमेट से, मतलब एक जनरलाइजेशन से लेके आ सकते हैं, लॉस एंड थ्योरीज बना सकते हैं, बिकॉज रिवर्स फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाई स्लोप टू डाउन स्लोप, वो नेचर है, राइट? बट ज्योग्राफिकल प्लान, दिस व्हाट आई टोल्ड यू, गॉड का प्लान क्या चाहिए हमको ये समझ में आना चाहिए। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं सम इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, a plus b plus c plus d plus e plus f, one if you say it in that way, it should be equal to the total sum, no? लेकिन अगर सम पूरा इंटीग्रेट करके वापस आने के बाद सम इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। जैसे एक देखो, क्रिकेट में न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का हमेशा ये बात बोलते हैं, सम इज ग्रेटर देन देयर पार्ट्स। हमेशा दे ट्रेंड टू प्ले इट एज ए यूनिट, तो उनका आउटकम हमेशा ज्यादा आता है। लेकिन एशियन कंट्रीज में देयर वाज ए फेज, इंडिया में भी कभी था, अभी उतना नहीं है बट पहले था, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी था, कि इंडिविजुअल हीरोज के ऊपर फोकस ज्यादा है। तो इसके कारण हमेशा everything revolves around individual contributions rather than team's contribution. So that is what the same point here also. Right. Note down general geography. Note down some aspects. General geography started by Verenius during 17th century. Started by Verenius during 17th century. General geography deals with the world as a unit. General geography deals with entire world as a unit. It was mainly restricted to physical geography. It was mainly restricted to physical geography as it could be understood through natural laws. It could be understood through natural laws. Whereas in spatial geography, in special geography, it could lead to natural laws. Whereas in special geography or regional geography, it's a description of individual countries
description of individual countries. It was difficult to establish laws, difficult for law formation as humans vary. As humans vary. Right. Special geography helped in formulation of structured ideas. Helped in formation of structured ideas. Then moving further, see, you if you have your book with you, Geographical Thought by Majid Hussain, right? In this book, if you go to the page, the chapter on this dualism and dichotomy, page number 294, right? Dualism and dichotomy in topics in 294 onwards, you have this topic discussion on every dimension. So if you see this is one of the important aspect I wanted to read. You just need to understand. See, Humboldt ने ये बोलता है कि the most important aim of all physical sciences is to recognize unity in diversity, to grasp the nature's essence under the cover of outward appearances. The purpose of this introductory chapter is to indicate the manner in which natural science can be endowed with a higher purpose through which all phenomena energies as revealed as one entity. So he is talking about how the natural phenomena can be revealed as one entity, right? So this is what he has focused upon, right? And he recognized the dualism of system versus regional, but he has focused on this, right? Then there is one more point I would like to tell you, very important. In the words of Berry, the regional and general geography are not different approaches, but are just two extremes of a continuum, he says. Right? He says two extremes of a continuum. Then, a Soviet scholar, this viewpoint, if you study, you will understand this point also. One can trace definitive cycles in the history of world science, periods where general absorbs the particular, and succeeded by those during which the particular destroys the general otherwise, and a single science disintegrates into an endless number of branches. This later differentiation leads to great extensions of knowledge but results in less of integrative overview of science, which shows that whole is greater than sum of its parts. Contemporary geography is a victim of such differentiation, right? So overall, what are they saying? They're all saying that general versus physical geography, both of them tend to not they are not versus each other. They are of similar dichotomies. They are of the larger continuum process, right? They support each other.
So what is the idea overall? They generally support each other. As a larger continuum. Right. Then remember some major contributors names and all, which would help you to understand, because anyhow further in our discussions we will study about Ratzel, Ritter and everything. वहां पर के लिए एक स्ट्रक्चर लेके आ जाऊंगा अभी ताकि आपको इजी हो जाएगा. So the ones who are regional and special geography, कौन कौन है यहाँ पर? रिटर है, कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, विडाल लाब्लाश, विडाल डी लाब्लाश, you can talk about Richard Hartstone, the areal differentiation concept. You can talk about Alfred Hettner. Some of them. Still so many are there, but these are sufficient. Then with respect to general or systematic, Verenius, Humboldt, Verenius, Humboldt are the two popular ones, right? You can also talk about William Morris Davis, Köppen, William Morris Davis. You can also talk about Köppen's classification of climate. So that's about general geography only. So maybe they'll ask you sometimes Ritter versus Humboldt. You need to understand something. Ritter versus Humboldt. So some things we'll try to remember about Ritter now. रिटर के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए. कार्ल रिटर, he has studied regions as unique entities. Studied regions as unique entities. Regions as unique entities. He has emphasized area-wise description. Emphasized area-wise description. He was interested in relationships within a region. Interested in relationships within a region. That's why he is considered as a founder of modern regional geography. Founder of modern regional geography. Humboldt studied phenomena globally. What did he do? He studied phenomena globally. Do you remember Humboldt current? The Peru current or the Humboldt? The same one.
He has focused on developed general laws and principles. Right. Focused on climatology. Climatology. Focused on physical geography in general. That is his contribution. Right. This is about the dimensions. Then we'll go to the next one, physical versus human geography. Physical geography versus human geography. One of the easiest dichotomy. The content matter, physical versus human geography. In fact, the dichotomy of physical versus human, it was there even in the Greco-Roman era. Okay, there even in the Greco-Roman era. So Greeks were the first who started studying the multiple dimensions of physical and human. Greco-Romans focused on multiple divisions or dimensions within the subject. मतलब थोड़ा साइंस उस जमाने में था, ये कहना चाह रहा हूं. For example, Herodotus and Strabo focused on human aspect. Herodotus, Strabo, they have focused on human aspects, whereas the other one, Hecates, focused on physical aspects. Hecates focused on physical aspects. Mostly all of them are determinants. मतलब environment is the base, nature is the base, क्योंकि उस जमाने का टेक्नोलॉजी अलग था, right? Then in the modern time, so even largely we can say the Al-Biruni and all, वो भी also all physical geographers. अच्छा, Al-Biruni is one who is not a physical geography. In the Arab period, Al-Biruni is human geographer. All others, Al-Masudi and all, are physical geographers. तभी जाके वो लोग मॉनसून के बारे में पढ़ाई किए थे. मौसम, सीजन, वही से आया था. Then you have seen that physical geography, why is the dimension? See, why is the variation? फिजिकल लोग ये बोलते हैं कि अगर फिजिकल पढ़े तो हमको जनरल लॉस, थ्योरीज, बाकी साइंस के तरह से बना सकते हैं, और एक दिस इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन के ऊपर ज्योग्राफी या सब्जेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. वो है उनके पॉइंट. उसमें एडवांटेजेस क्या होता है? यू विल बी फाइंडिंग ट्रेमेंडस एडवांटेजेस. एम आई राइट? एम आई राइट, ऑल ऑफ यू? You'll find what advantages? Tremendous advantages with respect to generalization of laws, theories. इसके थ्रू सब्जेक्ट ग्रो करेगा, सब्जेक्ट में पैसा आएगा. ऑल दोज एस्पेक्ट्स वुड बी देयर. ऑफ कोर्स वो भी एक है पॉइंट, बिकॉज दैट वाज द इरा वेयर दे आर आस्किंग क्या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ऐसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए. देखो एक पॉइंट,
If you focus too much on specialization, generalization तरह too much amount, if you focus too much on, for example, climatology, तब meteorology क्या होगा? If you focus too much on landforms, rock and all, तब geology क्या करेगा? If you focus too much on populations and all, तब demography क्या होगा? तो मतलब क्या है ना, ज्योग्राफी का मकसद ये होता है कि हर यूनिट्स को इंटीग्रेट करके पूरा लार्जर पिक्चर को समझ में आना. दैट इज द synthesis, regional synthesis. So that is what should be the idea of a geographer. But in the process, there is always a school of thought who focused on more theories, physical, who has focused on more human aspects, who have changed the nature. Tribes अलग अलग एरियाज में ट्राइब्स अलग है, लोग अलग है, उनका कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, द वे दे यूज द रिसोर्सेस अलग है, वो एक मैटर करता है करके अलग पॉइंट. अभी के जमाना में देखो, इंडिया में हमारे ना हमको है अतिथि देवो भव, वी हैव दैट फिलॉसफी, बट हाउ मच आर वी प्रैक्टिसिंग इन रियलिटी? हमेशा आप लोग देखते रहते हैं कि बहुत सारे पढ़ लिखे लोग भी कचरा को रोड के ऊपर फेंकते हैं, बट वी हैव दिस आइडिया कॉल्ड एज अतिथि देवो भव. फॉरेन कंट्रीज जाओ, यू टेंड टू सी दैट वहां पर वो लोग इन रिलेटिव टर्म्स बहुत फर्क दिखेगा, वेयर they don't throw the dust or the waste on to the common elements of humanity. कल्चर अलग है, तो फिर लोग भी द वे दे इंटरेक्ट विद द रिसोर्सेस भी अलग होगा. वहां का पॉपुलेशन का चैलेंज, वहां का रिवर चैलेंजेस इंडिया से अलग होगा, कल्चर अलग है, वो भी एक फैक्टर है. Am I right, all of you? Am I right? Hope you are all are following. You are following, all of you? Good. So in the process, you always seen that physical geography. So when you come to the later elements, once again, यहाँ पर भी Verenius was the first to suggest differences in the characteristics of physical and human geography. Verenius identified differences in the characteristics of फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. हाँ, क्लास में ये लिख सकते हैं, क्लास के नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में ये पीजी है जी कुछ नहीं होता है, तब पूरा लिखना पड़ेगा, याद रखना. देन उसके बाद हम्बोल्ट एंड रिटर. सी देखो दोनों, Humboldt and Ritter, both have studied the human aspects linkages with respect to the physical world. Humboldt and Ritter both have studied human beings in relation to physical aspects. लेकिन Ritter focused more on human elements, Humboldt focused more on physical elements. Humboldt focused more on physical elements. Ratzel was influenced by the concept. There was another person, Ratzel, no?
right? Ratzel was influenced by the concept called as social Darwinism. You will understand later on. Abhinay. Ratzel was. So next, Ratzel was influenced by social Darwinism. So her next point. So basically, he is a work on human geography, social Darwinism. Right. Then in the American school of thought, there was more emphasis on physical geography, क्योंकि once again same idea, naturalization general laws theories बनना बहुत easy है. उसके बाद लेकिन simple आने के बाद they are focused more on also human elements. तब तक हमेशा physical elements dominant थे. We will discuss that when we discuss about the simple Ratzel and all those ideas. Right. You see simple. So she has wrote a book called as Influences of Geographic Environment in 1911. Influences of geographic elements, influences of geographic environment. And since then, there was focus on human aspects. So, human aspects were more studied. Then, French school, overwhelmingly more human and regional, right? French school of thought, French geography, overwhelmingly supported in France. Maybe you can say major supporter to human geography. They have marginalized physical geography. This has happened. Vidal de Lablache and all the possibilism measures and all, they have made it that. So these are the points which you can write. See, please understand, having an integrated and overall, you see, having an integrated approach, having an interrelated approach, only then you can properly analyze. See, geography is all about interlinkages. So, what do I say? I would say geography is all about interlinkages. These interlinkages forms the critical nature of understanding the society and accordingly solve the problems of the society from a geographical viewpoint. This is what you need to
Remember always. Okay. I hope you all got the point. I hope you got the point. See, there are some more ideas. और एक dichotomy है time versus space. Should we study an each element only from the spatial point of view, or should we study from the historical viewpoint? हिस्टोरिकल से पढ़ना चाहिए या अभी के जमाने से पढ़ना चाहिए? टाइम वर्सेस स्पेस, टाइम, टेम्पोरल, हिस्टोरिकल अप्रोच, स्पेशियल area wise, right? The present spatial analysis. Geography is all about space and time, we say. Actually दोनों पढ़ना चाहिए, right? Present distributions, for example, distributions of tribals in India. If you see it, it is a spatial viewpoint. But to understand, क्या मैं कह सकता हूं टाइम भी एक मैटर होता है, टेम्पोरल. टाइम के हिसाब से जो भी मल्टीपल रेसेस आए थे, हाउ डू दे हैव एन इम्पैक्ट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. आई हैव टोल्ड यू इन यस्टरडेज क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे ना कि अगर आपको नक्सलिज्म के बारे में समझ में आना चाहिए, one of the factor we'll say is the factors associated with the geographical isolation. Interior areas not connected, lack of development, एक मेजर फैक्टर है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नक्सलिज्म प्रमोट होने के लिए. वो है स्पेशल डायमेंशन. लेकिन हिस्टोरिकली ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर अभी क्यों, द ट्राइब्स, व्हाई आर दे नॉट इन ट्रस्टवर्दी विथ रिस्पेक्ट टू द सोसाइटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल? रीजन है हिस्टोरिकल. इससे पहले ब्रिटिशर्स, इससे पहले मल्टीपल रेसेस, हमेशा दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड. तो हम लोग एक फैक्टर को समझ में आने के लिए क्या हमको स्पेस में पढ़ना चाहिए या टाइम में पढ़ना चाहिए? एक्चुअली दोनों पढ़ना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द टेम्पलेट. ऑलवेज फॉर ऑल दिस थिंग्स वन एंड द सेम. रीजनल पढ़ना है या जनरल पढ़ना है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है. अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज and say to the conclusion that this is the thing, right? Then there are one more thing, inductive and deductive. Inductive method, deductive method. What is inductive and deductive? Inductive and deductive, anyone? Inductive and deductive, anyone? Let's see. Vagisha says inductive is specific to general. Okay. Then inductive is specific to general, right? Data to theory, specific or particular to general, that is inductive method. Then direction, then the other method, deductive, theory to data, particular to general, general to particular, general to particular. For example,
if I am trying to identify the, for example, we have a group of 60 people, 60 students are there. I wanted to identify the average height. How do I identify the average height? For example, इंडियन रेस का एक एवरेज मीडियम हाइट रहता है. So we say that Indian usual average height is this, and accordingly we would say that this would be the average height. That is deductive method. There is already a theory, an idea, a general, and then you are particularizing to this community. Deductive method. दूसरा है इंडक्टिव मेथड. जितने लोग हैं सब लोग खड़ा हो जाओ, सबका हाइट मेजर करेंगे एंड विल गो बाय एवरेजेस. Inductive method, right? So that is what is called as inductive method. So in terms of usages of data and viewpoints, this is also a method, inductive versus deductive. So note down this, inductive versus deductive. Note down. In the inductive method, you study with facts. In the inductive method, you start with facts, observations and data. You start with observations, data, facts, and conclude. And conclude. And conclude. Example. You have identified 100 villages. You found out that most of the villages are around a river channel, indicating that civilizations flow around rivers. Inductive method, right? So note down that. You study 100 villages and you came to the conclusion that you studied 100 villages. So one example I would say, study 100 villages. Most of the villages are nearer to a river source, river or a water body. So you have concluded. What is your conclusion? Your conclusion says that human settlements generally develop near water sources. Humans settle near water sources. ये होता है inductive method. Deductive method क्या होता है? The opposite. You start with a theory or a general principle and test in a particular case. Start with a theory or a general principle and test it with a particular case. So here you already know that humans tend to live at the water sources. You will go and study in one of the region and see, oh, क्या ऐसे डेवलप हो रहा है कि नहीं? हाँ, डेवलप हो रहा है, ठीक है. Conclude. So you have an idea, theory, and you test, and then you conclude. This is deductive method. अगर क्लास में मैं ही चीज हूं, आई टॉपर्स क्या काम करते हैं? I generally say that toppers, there is a consistency in their preparation, there is a consistent approach, there is a discipline, there is a dedication and all. मतलब एक theory बता रहा हूं. हमेशा मैं पूछता हूं, क्या इस साल आप में आपसे किसी एक टॉपर बन गए? क्या बरखा बन गई, या पिंकी बन गई, या वगीशा बन गई? देन
देन मैं पूछता हूँ इन लोगों से कि आप क्या किए थे ताकि आप टॉपर बन गए। मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ थीरीज है, वो थीरीज को आपके थ्रू से टेस्ट कर रहा हूं, लेकिन सडनली आई फाउंड ए न्यू अप्रोच। आप लोग इसके हिसाब से अच्छा आप ये नहीं किए, दूसरे किए थे, सो देन आई विल कंक्लूड फर्दर इनटू नेक्स्ट लेवल। देयर इज ए न्यू डेटा आई गॉट एंड दैट आई विल कंक्लूड एज ए न्यू थ्योरी। ये होता है इंडक्टिव अप्रोच, राइट? इज इट? एम आई राइट ऑल ऑफ यू? एम आई राइट ऑन दिस? Right. Okay. The last one we have already discussed that in a little way. In detail भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन डाइकोटमी एंड ड्यूअलिज्म में टॉपिक बताने के लिए थोड़ा एक बता देता हूं, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। Environment controls humans, nature controls us. Environment controls humans. Environment control humans. Nature is dominant. Those are determinants. You can say Greco-Romans. You can say Arabs. All are determinants. मतलब उनके मानना है कि nature is dominant. All the actions and all are controlled by the nature. So environment is the human environment. So subject matter क्या है यहाँ पर? How to approach human environment relations. How to approach human environment relationship. Determinants. Possibilism क्या है? Humans modify environment. So they say that what? Humans modify environment. There are everywhere possibilities. Technology would decide. Technology would decide. So we can say Vidal de Lablache. Is a possibilistic viewpoint. So now possibilism है, ये सच है, ये सच है, ऐसा कुछ नहीं है. If there are two extremes, there is always multiple viewpoints. There is always a balanced ways which we need to understand. ऐसे नहीं कि not at the cost of other. Regional synthesis, regional idea. अभी के जमाना में क्या हम लोग environment at the cost of the, are we not promoting more possibilism? Yes, but if you do it too much of this, also a problem. If you don't do this, focus that हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है. Absence of free will. फ्री विल कुछ नहीं है. अब जो है एनवायरमेंट उसी के हिसाब से करना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, हमारा विल भी है, हम वॉलंटरी है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ चीजें याद रख के करना, वो है पॉसिबिलिज्म. सो वन एक्सट्रीम, अनदर एक्सट्रीम. इट इज नॉट, माइट नॉट बी एन एक्सट्रीम, बट समवेयर 1:10 में, अगर ये 1 में है, ये 8 में रहेगा, बिल्कुल 10 में नहीं. राइट? सो दैट इज व्हाट इज द continuum, the dichotomies. Remember, dichotomies are continuum processes, not just a aspect. They are continuous processes. They are not just one differences. They are always here to help in regional synthesis. They are helping in interrelations and developing into a synthesis. That is what you need to write. Okay, then I hope you all have got that understanding. Any doubts? Any doubts you can ask me, otherwise we can end the session for today. We'll see the remaining aspects tomorrow. Any doubts you can ask me, otherwise we can end.
Okay, then all of you, chalo, thank you. Have a good day. Enjoy. Keep learning. Keep smiling. And enjoy the preparation process. Don't forget, keep smiling. Thank you, all of you. See you tomorrow.